हेलो एवरीवन, मैंने इस क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मॉडर्न हिस्ट्री की पीआईक्यू के साथ साथ मैंने उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट एंड द स्टुअर्ट स्पीड्स। ओके, पहले इसका पीआईक्यू हम देखेंगे, देन हम एक ही साथ मेंस का पीआईक्यू भी देखेंगे एंड देन हम शॉर्ट नोट से उसका रिवाइज भी करेंगे। ओके, शॉर्ट नोट से हम उसका रिवाइज भी करेंगे। और एक बात, मैंने इस सीरीज में मॉडर्न हिस्ट्री की इस सीरीज में एक्टिव रिकॉल भी करूंगी, सेकेंड डे में, थर्ड डे में भी एक्टिव रिकॉल करूंगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द टुडे क्लास। आज के क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट्स एंड स्टुअर्ट स्पीड्स with reference to the book দেশের কথা written by Shankaram Ganesh Dushkar during the freedom struggle. Consider the following statement. Okay, it warned against a colonial state's hypnotic conquest of mind. It inspired the purpose of Swadeshi street play and folk songs. It used the Desh by Dushkar was in the specific context of the origin of Bengal. Okay, who is of the statement given above are correct? तो देख रहे हो क्या क्या ऑप्शन गिवन है, तो हो गया। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, देशेर कथा रिटन बाय द शंकराम गणेश दुष्कर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वार्नड अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट्स hypnotic conquest of the mind. It inspired the purpose of Swadeshi street play and folk songs. The use Desh by Dushkar was in the specific context in the region of Bengal. With reference to the Swadeshi movement, consider the following statement. It contributes to the revival of the indigenous artisan craft and industries. Okay, it's contribute to the revival of the indigenous artisans craft and industries. The National Council of Education was established as a part of the Swadeshi movement. National Council of Education was established as a part of the Swadeshi movement. Who is of the given as the corrected? The Swadeshi and the boycott was adopted as method of struggle for the first time during the so the Swadeshi and boycott was adopted as method of struggle for the first time during the agitations against the partition of Bengal, Home Rule movement, non-corporation movement, visit of the Simon Commission to India. So क्या बोला, Swadeshi and the boycott was adopted as the method of the struggle for the first time during the agitation against the partition of Bengal, Home Rule movement, non-corporation movement and visit of the Simon Commission to the India. Next question हम देखेंगे, what was the main reason the split in the International Congress at Surat in 1907? Introductions of communalism into the Indian politics by Lord Minto. Okay, so introduction of communalism into Indian politics by Lord Minto. And extremist, lack of faith in the capacity of the moderate to negotiate with the British government. Okay, extremist, lack of faith in the capacity of the moderate to negotiate with the British government. And foundation of the Muslim League. Okay, foundation of the Muslim League. Aurobindo Ghosh, inability to be elected as the president of the Indian National Congress. Okay, so क्या बोला, what is the main reason for the split of Indian National Congress at the Surat in 1907? Introduction of the communalism into the Indian politics by Lord Minto. Okay, introduction of the communalism into the Indian politics by Lord Minto. An extremist, lack of faith in the capacity of the moderate to negotiate with the British government. Then I have foundation of Muslim League. Aurobindo Ghosh's inability to be elected as the president of Indian National Congress. Okay, then I have partition of Bengal made by the Lord Curzon in 1905. Okay, lasted until the First World War, when the Indian troops were needed by the British and the partition was ended. Okay, King Gors, he abrogated Curzon Act at the Loyal Durban in Delhi. Okay, Gandhiji lost his civil disobedience movement and other partition of India in 1947. East Bengal became the East Pakistan. Okay, so क्या बोला यहाँ पर, partition of the Bengal made by the Lord Curzon in 1905 lasted until the First World War,
when the Indian troops were needed by the British on the partition was ended. King got an abrogated Karjan Act at the Royal Durban in Delhi. Okay, Gandhiji launched his civil disobedience movement. Other partition of India in 1975, 1947 was when East Bengal became the East Pakistan. Next question. Consider the following statement. Statement 1 and Statement 2. 7th August is declared as National Handloom Day. Okay, 7th August is declared as the National Handloom Day. It was 1905 that Swadeshi movement was launched on the same day. Okay, it was the 1905 that the Swadeshi movement was launched on the same day. Which one of the following is correct in respect of the above statement? Okay, both statement 1 and statement 2 are the correct, and statement 2 is the correct explanation for the statement 1. तो अब तुम जानते हो again हम PI को देखेंगे मेंस की. Why did the moderates fail to carry conviction with the nations about their proclamant ideology and the political goals by the end of the 9th century? Okay, why did the moderates fail to carry convictions? Okay, why did the moderate fail to carry conviction with the nations about their proclaiming ideology and the political goals by the end of the 19th century? To what extent did the role of the moderates prepare a base for wider freedom movement? Comment. Okay, so क्या बोला? Why did the moderate fail to carry conviction? Fail to carry conviction with the nations about their proclaimed ideology and political goal by the end of the 19th century. To what extent did the role of the moderate prepare a base for wider freedom movement? Comment. Okay, next. तो हम यहाँ पर क्या क्या देखेंगे वो देखो पहले डिफरेंट फेजेस इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट. नेशनलिस्ट मूवमेंट में डिफरेंट फेजेस क्या है वो देखेंगे. Different phases in the nationalist movement. Era of the modern ideological moderate. Okay, demand of moderate. British reaction to the Congress. Era of the extremist. Okay, ideology of the extremist. Era of the extremist. Ideology of the extremist. Work of extremist. Okay, moderate versus extremist and Viceroy Karjan. Other work of Karjans. देन हम देखेंगे स्वदेशी मूवमेंट एंड उसके बाद हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट. ओके, फिर से देखो इस पॉइंट को याद करना चाहिए. डिफरेंट फेजेस इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट. ओके, डिफरेंट फेज क्या है इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट. एरा ऑफ द मॉडरेट आइडियोलॉजी ऑफ मॉडरेट की आइडियोलॉजी. तो एरा ऑफ द मॉडरेट एंड आइडियोलॉजी ऑफ द मॉडरेट एंड डिमांड ऑफ द मॉडरेट. ओके, व्हाट इज द डिमांड? तो व्हाट इज द डिमांड, व्हाट इज द आइडियोलॉजी एंड व्हाट इज द एरा ऑफ मॉडरेट्स. ब्रिटिश की रिएक्शन क्या था कांग्रेस के ऊपर. ओके, हम नेक्स्ट देखेंगे एरा ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट. एक्सट्रीमिस्ट की एरा देखेंगे, आइडियोलॉजी देखेंगे एंड वर्क ऑफ एक्सट्रीमिस्ट देखेंगे. क्या एक्सट्रीमिस्ट की एरा, आइडियोलॉजी एंड वर्क. ओके, देन वाइसरॉय कार्जन्स के बारे में एंड अदर वर्क ऑफ कार्जन्स के अदर वर्क भी देखेंगे. वाइसरॉय कार्जन अदर वर्क्स ऑफ द कार्जन. ओके, स्वदेशी मूवमेंट 1905 से 1907 में एंड इम्पैक्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या क्या हुआ है. ओके, चलो नेक्स्ट. तो व्हाट इज द डिफरेंट फेज इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट की डिफरेंट फेज क्या क्या है. तो फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज एंड द थर्ड फेज. फेज को पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो क्या क्या मैंने बोल रहा हूँ. फर्स्ट फेज था 1885 से 1905 के बीच में. ओके, 1885 से 1905 के बीच में फर्स्ट फेज. सेकेंड फेज क्या था 1905 से 1918 के बीच में. ओके, 1905 से 1918 के बीच में सेकेंड फेज. थर्ड फेज 1919 से 1975 के बीच में. ओके, 1919 से 1905 के बीच में. ओके, तो फर्स्ट फेज में क्या होगा. फर्स्ट फेज चलो देखो. फर्स्ट फेज में क्या होगा. दिस फेज इज नोन एज okay, the moderate phase, extremist phase, okay, are known as the mass mobilization. Okay, under the Mahatma Gandhi mass mobilization. Okay, फर्स्ट फेज को क्या बोलते हैं. फर्स्ट फेज को बोलते हैं moderate phase. During this period their demand were mainly reform
in legislature and civil services. Okay, during this period, their demand were mainly reformed in legislature and civil services. Okay, their demand were mainly reformed and in legislature and civil services. Okay, demand reform के बारे में बोला है, demand reforms and extremist phase स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट की बात यहाँ पर है, was adopted as the political goal. The mass mobilization under महात्मा गांधी पूर्ण स्वराज के बारे में आया और complete independence. ओके, तो याद करना पहले 3 फेज में डिवाइड किया है, फर्स्ट फेज, ओके, सेकंड फेज, थर्ड फेज. ओके, फर्स्ट फेज में मॉडरेट फेज, सेकंड एक्सट्रीमिस्ट फेज, थर्ड मास मोबिलाइजेशन अंडर द महात्मा गांधी. फर्स्ट फेज को बोलती है, फर्स्ट फेज में डिमांड था ओनली रिफॉर्म्स ऑफ इन लेजिस्लेशन एंड सिविल सर्विसेज. सेकंड फेज में डिमांड था स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट. ओके, पॉलिटिकल गोल के स्वराज एंड सेल्फ गवर्नमेंट. थर्ड फेज में मेन डिमांड था पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस. ओके, देन हम अब मॉडरेट की एरा को देखने की कोशिश करेंगे. मॉडरेट्स, ओके, हैज फुल फेथ. इसका फेथ क्या था मॉडरेट्स की, एंड इसने क्या बिलीव किया. ओके, एंड प्रोमिनेंट लीडर्स कौन कौन से हैं, प्रोमिनेंट लीडर्स तो इजी देखो. मॉडरेट हैड द फुल फेथ इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस. British are not aware the real situation, not aware the real situation of the Indians. क्या फेथ रखते थे? Moderates had full faith in the British sense of justice. That means British जो justice provide करेंगे वो बहुत अच्छी होगा, ये इसका full faith था. And British were not aware of the real situation of Indians. क्या फेथ रखते थे? British not aware of the real situation of the Indians. Indians की real situation नहीं जानते हैं. ओके, मॉडरेट्स वर स्ट्रेंथ्स बिलीव ऑफ लिबरेशन. तो मॉडरेट्स क्या बिलीव करते थे? ओके, मॉडरेट्स क्या बिलीव करते थे? लिबरेशन. जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीडेशन होगा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को एग्रीडेशन, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन सही होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे होगा, देन विद इन द लॉ के अंदर दे रिस्टोर टू पिटिशंस, रिजोल्यूशंस एंड द मीटिंग. इस तीनों में वो बिलीव करते थे, लिबरलिज्म में बिलीव करते थे. और कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीडेशन विद इन द लॉ. ओके, विद इन द लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीडेशंस को मेंटेन करके, विद इन द लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीडेशन को मेंटेन करके वो क्या क्या करना चाहते थे? रिस्टोर द पिटिशंस, दे रिस्टोर टू पिटिशन. पिटिशन देगा, रिजोल्यूशन देगा एंड मीटिंग होगा. पिटिशन होगा, पिटिशन होगा, रिजोल्यूशन होगा, मीटिंग होगा. इसको लिबरलिज्म बोलते हैं. एंड विद इन द लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीडेशंस. प्रोमिनेंट मॉडरेट लीडर्स में था दादाभाई नौरोजी, जो 3 टाइम्स ऑफ प्रेसिडेंट रहे, एंड फिरोज शाह मेहता एंड DC वाचा एंड WC बनर्जी एंड एसएन बनर्जी. ओके, WC बनर्जी, दादाभाई नौरोजी ने नेम दिया था कांग्रेस की, एंड WC बनर्जी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. देन हो गया. आप आइडियोलॉजी देखो, आइडियोलॉजी. ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीडेशंस, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीडेशन में बिलीव करते थे. स्ट्रगल मार्क्ड बाय पॉलिटिकल मॉडरेशन. ओके, स्ट्रगल मार्क्ड बाय द political moderation. Struggle revolves, or struggles revolves around the issue reform in the irrigation. Revolves around the issue of the reform in the legislation. Focus on the political economic issue. Okay, they rely on constitutional. They rely on organized lectures. Okay, organized lectures and more use various type of newspaper. ये यूज करते थे. ओके, तो फिर से देखो, यहाँ पर नोटिस करो आइडियोलॉजी ऑफ द मॉडरेट्स की आइडियोलॉजी क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन एग्रीडेशन. दैट्स मीन वो एप्लीकेशन देगा. ओके, दैट्स मीन वो एप्लीकेशन देगा, पिटीशन होगा, क्रिटिक एंड वाया प्रेस. एप्लीकेशन पिटीशंस, मीटिंग्स, रिजोल्यूशंस, क्रिटिक करेगा बाय द प्रेस. ओके, देन स्ट्रगल मार्क्ड बाय पॉलिटिकल मॉडरेशन. पॉलिटिकल मॉडरेशन से स्ट्रगल मार्क्ड होगा. स्ट्रगल रिवॉल्व around the issue. Okay, around the issue of reforms in the legislation. Okay, क्या बोला हमें?
struggles reforms around the issue of reform in legislation. ओके, रिफॉर्म इन लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन को रिफॉर्म करके वो इशू को सॉल्व करेगा। ओके, लेजिस्लेशन को रिफॉर्म करके इशू को सॉल्व करेगा। फोकस ऑन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इशू। Political and economic issue, economic situation of Indians is not good and political situation of Indians is not good। इस दोनों को फोकस करते थे। ओके, they relied on the constitutional and peaceful means to achieve their cause। okay, they relied on the constitutional and peaceful, क्या बोल रहा मैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल मीन्स टू अचीव देयर गोल्स। देयर गोल्स को अचीव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल पीसफुल मीन्स यूज करते थे। ओके, दैट मीन दे रिलाइड ऑन दे रिलाइड ऑन कोई भी गोल को अचीव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स यूज करते थे और आई मीन मीन्स दैट मीन वे। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल वे एंड पीसफुल वे भी यूज करते थे। मॉडरेट ऑर्गेनाइज लेक्चर इन वेरियस पार्ट ऑफ इंग्लैंड की वेरियस पार्ट में ऑर्गेनाइज लेक्चर देते थे टू क्रिएट द पब्लिक ओपिनियन। ओके, मॉडरेट्स ऑर्गेनाइज लेक्चर को ऑर्गेनाइज करते थे इन द वेरियस पार्ट ऑफ इंग्लैंड की वेरियस पार्ट में टू क्रिएट द पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करने के लिए। ओके, मॉडरेट यूज वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड chronicles to criticize the government policies, including the Bengali newspaper, Bombay Chronicles, Hindustan Times, Indo Prakash, रेस्ट बहुत, वीकली जर्नल। ओके, तो क्या क्या हुआ फिर से देखो। आइडियोलॉजी में क्या क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीगेशन था, एप्लीकेशन, पिटीशन, रिजोल्यूशंस, मीटिंग्स, क्रिटिक्स बाय प्रेस। ओके, देन struggle marked by political moderation, on depend on the political moderation, struggle marked होते थे and struggle revolves around the reform in the legislation को रिफॉर्म करके ठीक करने की कोशिश करते थे एंड फोकस ऑन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, और पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इशू में फोकस करते थे, पॉलिटिकल इशू एंड इकोनॉमिक इशू में फोकस करते थे। ओके, फोकस ऑन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इशू, डन। एंड दे रिलाइड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पीसफुल मीन्स, इकोनॉमिक इशू देखते थे, दे रिलाइड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल मीन्स टू अचीव देयर गोल्स। मॉडरेट ऑर्गेनाइज द लेक्चर इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, इनके वेरियस पार्ट में लेक्चर ऑर्गेनाइज करते थे टू क्रिएट द पब्लिक ओपिनियन। दे यूज द वेरियस टाइप्स ऑफ द न्यूज़पेपर्स एंड chronicles to critique the government policies, okay, including the Bengali newspaper, Bombay Chronicles, Hindustan Times, Indo Prakash यूज करते थे। ओके ओके, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द मॉडरेट्स, मॉडरेट का डिमांड क्या क्या था, 4 टाइप्स ऑफ डिमांड था। एक पॉलिटिकल डिमांड, मैंने एक बोला पॉलिटिकल इकोनॉमी बात की, बोला इस दोनों इशू को सॉल्व करना मेन प्रायोरिटी था, जिससे उसको पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिमांड था बोलेंगे। देन मिलिट्री डिमांड भी था और सोशल डिमांड भी था। ओके, क्या क्या बोला, पॉलिटिकल इकोनॉमिक इशू को यूज करना इसका मेन फोकस था, और मिलिट्री डिमांड और सोशल डिमांड भी प्रेजेंट था इसके अंदर। ओके, डन। तो पॉलिटिकल डिमांड में एक्सपेंशन, क्या एक्सपेंशन होगा, सेपरेशन क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, एंड क्या एबोलिश करेगा, एंड अपॉर्चुनिटीज क्या है, मोर अपॉर्चुनिटी। ओके, तो क्या एक्सपेंशन होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल with more powers and representation of Indians in them। Okay, separation of the judicial and executive powers, judicial power को और executive power को separation करना का main focus था। representation of Indians in various council, Indians को represent करना in the various council। abolition of the Indian council, okay, लंदन की इंडियन काउंसिल जो होगा उसका एबोलिशन करना, and more opportunity for the Indians civil services and the simultaneous examination for Indian civil servant in London and India। ओके, फिर से देखो क्या बोला मैंने, पॉलिटिकल डिमांड के बारे में बोला। पॉलिटिकल डिमांड की एक्सपेंशन, क्या एक्सपेंशन होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सपेंशन होगा विथ मोर पावरफुल होगा एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन देम। ओके, तो एक्सपेंशन क्या, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है तुमको पता ही, लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड करना। ओके, the more powerful and representative of Indians in them। Okay, separation
सेपरेशन ऑफ द जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर एंड एग्जीक्यूटिव पावर को सेपरेशन करना, आर्टिकल कौन, आर्टिकल 50। ओके, देन रिप्रेजेंटेटिव इंडियंस को रिप्रेजेंट करना वेरियस काउंसिल में। ओके, इंडियंस को रिप्रेजेंट करना वेरियस काउंसिल में। देन एबोलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल, इंडियन लंदन में जो इंडियन काउंसिल है, इंडियन काउंसिल का एबोलिशन करना, ये पॉलिटिकल डिबेट था। एंड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस, इंडियन को मोर अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस इन द सिविल सर्विसेज एंड साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन फॉर ICS in London and Indian. Okay, simultaneous examination for ICS in London and in India. Then next question, इकोनॉमिक डिमांड, इकोनॉमिक डिमांड को देखो, इंड ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड। ओके, इकोनॉमिक डिमांड, इंड ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड, क्या इंड होगा, क्या रिडक्शन होगा, क्या एवोल्यूशन, इनकरेजमेंट क्या है, डेवलप क्या होगा। तो इंड होगा इकोनॉमिक ड्रेन्स, इकोनॉमिक ड्रेन्स इंडिया से जो बहुत सारा पैसा, बहुत सारा मनी जो लंदन में ट्रांसफर हो रहा था उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ड्रेन। इंडिया से बहुत सारा पैसा कहाँ जा रहा था, लंदन में जा रहा था, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ड्रेन बोलते हैं। रिडक्शन ऑफ द लंदन रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू। ओके, रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू को रिडक्शन करना। ओके, रिडक्शन हो जाएगा लैंड रेवेन्यू। दैट्स मीन ब्रिटिश इंडियन से जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, उस लैंड रेवेन्यू को कलेक्शन को रिडक्शन कर देना की बात को बोलते हैं इकोनॉमिक डिमांड। एवोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट टैक्स, सॉल्ट टैक्स को एबोलिश करना। ओके, एवोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट टैक्स हो गया। दैट मीन ब्रिटिश सॉल्ट के ऊपर भी टैक्स ले लेते हैं, तो सॉल्ट टैक्स का एबोलिशन करना। इनकरेजमेंट टू मॉडर्न इंडस्ट्रीज थ्रू डायरेक्ट गवर्नमेंट एड। ओके, दैट्स मीन एनकरेजमेंट करना, इकोनॉमी के लिए एनकरेजमेंट करना। मॉडर्न इंडस्ट्री जो वहाँ पर उस टाइम में जो प्रेजेंट था, मॉडर्न इंडस्ट्री उस टाइम में जो प्रेजेंट था, उस मॉडर्न इंडस्ट्री को क्या करना, एनकरेजमेंट करना टू डायरेक्ट गवर्नमेंट एड। ओके, टू द डायरेक्ट गवर्नमेंट एड। देन डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर बैंक्स, एग्रीकल्चर बैंक डेवलप करना टू इंड द एट्रोसिटीज, इन द एट्रोसिटीज ऑफ द मैनी लॉन्डर्स। ओके, तो फिर से क्या इन करेगा, इन करेगा হচ্ছে इन करेगा इकोनॉमिक ड्रेन्स। ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया से जो लंदन में पैसा ड्रेन करके ले जा रहा था उसको इन करना, एंड सॉल्ट टैक्स को एबोलिश करना। ओके, लैंड रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को देना पड़ती है उसको रिडक्शन करना, एंड एनकरेज कर मॉडर्न इंडस्ट्री को एनकरेजमेंट करेगा टू द डिलेड गवर्नमेंट एड, टू द डिलेड गवर्नमेंट एड्स। ओके, एड मॉडर्न इंडस्ट्री को एनकरेजमेंट करना, डेवलप ऑफ एग्रीकल्चर बैंक को डेवलप करना इन द एट्रोसिटीज ऑफ मनी लेंडर्स, तो इन द एट्रोसिटीज ऑफ मनी लेंडर्स। ओके, अब हम देखेंगे मिलिट्री डिमांड। मिलिट्री डिमांड दैट्स मीन यहाँ पर क्या होगा, क्या रिपील होगा, क्या अपॉइंटमेंट होगा और क्या रिडक्शन होगा। ओके, रिपील करेगा आर्म्ड एक्ट को रिफिल होगा। अपॉइंटमेंट होगा इंडियंस को इन द कमीशन रैंक में, कमीशन रैंक में इन द आर्मी के कमीशन रैंक में इंडियंस को अपॉइंटमेंट करेगा, और आर्म एक्ट को रिपील होगा। और मिलिट्री एक्सपेंशन, ओके, रिडक्शन ऑफ द मिलिट्री एक्सपेंशन को रिडक्शन करना। डन। मोर एक्सपेंडिचर्स ऑन वेलफेयर एक्टिविटी, सिविल राइट लाइक एन इम्प्रूवमेंट। सो क्या होगा, सोशल डिमांड में मोर एक्सपेंडिचर होगा इन ऑन वेलफेयर एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना इसका मेन प्रायोरिटी था। ओके, सिविल राइट्स लाइक द फ्रीडम ऑफ स्पीच थ्रू थॉट एसोसिएशन एंड पेयर, इस सिविल राइट को पाना। इम्प्रूवमेंट इन कंडीशंस ऑफ द प्लानिटेशन लेवल। ओके, तो हो गया मोर एक्सपेंशन ऑफ द वेलफेयर एक्टिविटी, दैट मीन सोसाइटी को अच्छे से उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जो हम यूज़ करेंगे उसको क्या बोलते हैं, वेलफेयर एक्टिविटी बोलते हैं, और उसको एक्सपेंड करना। ओके, सिविल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, आर्टिकल 19, अभी आर्टिकल 19, थॉट्स एंड एसोसिएशंस एंड पेज। ओके, देन राइट टू पेज, आर्टिकल 21, लेकिन एसोसिएशंस के बारे में जो बोल रहा है वो आर्टिकल 19। इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ द प्लानिटेशन लेबर्स, इम्प्रूवमेंट इन कंडीशन ऑफ द प्लानिटेशन लेबर्स। ओके, प्लानिटेशन लेबर्स की कंडीशन को इम्प्रूव करना। तो हो गया, फिर से बोलो। पॉलिटिकल डिमांड में क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर रिप्रेजेंट इंडियंस एंड इंक्रीज द पावर्स।
Okay, and separation of the judicial and executive of Article 15 representation of the Indians in the various council. Representation of the Indians in the various council. Okay, and abolition of the Indian Council in the London. Representation of Indians in the various council. Done. Okay. Abolition of Indian Council. Indian Council abolition करना and more opportunities for Indians. More opportunity for Indians in the civil services and simultaneous examination for Indian civil service in London and Indians. Then Indian Council of London में सब उसको application करना. Economic demand में int होगा economic drain. int होगा economic drain. Abolition होगा salt tax. Reduction होगा land revenues and encouragement होगा industries, modern industry through the direct government aid. And developed होगा agriculture banks to end the atrocities of many learners. लोग एंड मिलिट्री में रिपील होगा आर्म्ड एक्ट रिपील होगा अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन इन कमिश्नर रैंक इन द आर्मी अपॉइंटमेंट इन इंडियंस इन द कमिश्नर रैंक इन द आर्मी एंड रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंशन को रिडक्शन करना एंड सोशल डिमांड में मोर एक्सपेंशन इन वेलफेयर एक्टिविटी more expansion of the welfare activities, civil rights like the freedom of speech, thoughts and associations and trade. Improvement in condition of the plantation labor. Okay, improvement in condition of the plantation labor. Then हम देखेंगे ब्रिटिश रिएक्शन टू द कांग्रेस फेज 1 एंड फेज 2 की रिएक्शन देखेंगे. इनिशियली क्या रिएक्शन था? ओके, इनिशियल एटीट्यूड and initial British thought okay with the appointment of then change their attitude. Okay, next phase 2 में after 1887 and Dufferin stated the British further passed the policies divide and rule. Okay, देखो इनिशियल एटीट्यूड क्या था? Initial attitude of the British was quite flexible towards the INC and did not adopt the official hostility. Of the British was quite flexible towards the Indian National Congress. Okay, quite flexible था. Indian National Congress did not adopt the official hostility. Okay, quite flexible था Indian National Congress. And initially the British thought that INC, Indian National Congress, would keep itself busy in academic discussions. Okay, busy in academic discussion confined to handful people. Okay, with appointment of Badruddin Taibji as the president of INC, British changed their attitude toward the Congress. Okay, फिर से देखो इनिशियली क्वाइट फ्लेक्सिबल था इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में और डिड नॉट एडॉप्ट द ऑफिशियल हॉस्टिलिटी. ओके, एंड initially the British thought that Indian National Congress would keep itself busy in the academic discussions and confined in the handful people. Okay, then with the appointment of the Badruddin Taibji as the president of the INC, British changed their attitude towards the Congress. Okay, British changed their attitude towards the Congress. Done हो गया their attitude towards the Congress. Okay, then phase 2 in 1887 their attitude steepened and they began to brand nationalists as disloyal babus. Okay, nationalist को brand की नेम दिया था कैसे? disloyal babus, seditious brahmin and the violent villain. Okay, disloyal babus, seditious brahmin and violent villain. Okay, Dufferin stated that Congress only represented a microscopic minorities. Congress only represented a microscopic minorities. The British further pushed the policy of divide and rule United Patriotic Associations. Okay, divide and rule further pushed the policy of divide and rule United Patriotic Associations against the Indian National Congress. Okay, and the feudal class against the modern intelligence.
and communal rivalry among educated Indians. Okay, over the courses of government jobs. Done. So क्या क्या मैं बोला phase 2 में after 1887 their attitude steepened and they began to brand nationalist. Okay, disloyal Babu's sedition providence and violent villains. And then Dublin stated that Congress only represented a microscopic minorities. Microscopic minorities. The British further pushed the policy. The British further pushed the policy divide and rule. Okay, divide and rule. United Patriotic Association against the INC. Okay, United Patriotic Association against the INC. INC की against में United Patriotic Association create की and feudal classes. Okay, feudal classes against the modern intelligence. Yeah. Okay, feudal class को modern intelligence and communal rivalry among educated Indians over coaching of government jobs. Done. अब हम देखेंगे era of the extremist. अब हम देखेंगे era of the extremist ideology and work. Okay, so extremist की era, ideology and work of extremist. So it took a concrete shape. Okay, his geographical region. Okay, government was taking away existing right. Taking away the existing right. Done. Era of the extremist. Extra constitutional agitations, Swaraj or self-rule, direct political actions. They opposed westernizations. Okay, program. एक मिनट, क्या अपोज करेगा? तो गोल क्या था? ओके, नेक्स्ट क्या एक्स्ट्रा किया है? कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रेशन, प्रोग्राम्स ऑफ बॉयकॉट. क्या क्या प्रोग्राम्स था? नेशनल एजुकेशन स्कीम क्या था? स्कीम. ओके, नहीं, बॉयकॉट के बारे में बोला. ओके, पैसिव रेसिस्टेंस, रीअसेशंस ऑफ नेशनल प्राइड. डन. ओके, देखो, अब देखो, era of the extremists, it took a concrete shape by 1905 during the Bengal partitions. During the Bengal partition, extremists took a concrete shape, created a concrete shape. Okay, during the Bengal partition, it took a concrete shape. Okay, by 1905 during the Bengal partitions, they arose in 3 geographical regions. Okay, they arise the three geographical region. The Maharashtra group led by Bal Gangadhar Tilak, and the Bengal group led by Bipin Chandra Pal and Aurobindo Ghosh, and the Punjab group led by the Lala Rajpat Rai. Okay, so क्या क्या मैंने डिवाइड किया? महाराष्ट्र ग्रुप जो बाल गंगाधर तिलक, बेंगल ग्रुप बिपिन चंद्र पाल एंड अरविंद घोष, पंजाब ग्रुप लीड बाय लाला राजपूत राय, लाल बाल पाल. ओके, तो यहाँ पर तुम देखो बाल गंगाधर तिलक. ओके, देन आएगा बेंगल में बिपिन चंद्र पाल, देन आएगा अरविंद घोष एंड पंजाब ग्रुप में लाला राजपूत राय, तो इसलिए लाल बाल पाल. डन. तो 3 जियोग्राफिकल रीजन क्रिएट किया. एक्सट्रीमिस्ट के एरा में एक राइज हुआ है, कॉन्क्रीट शेप लिया है बाय द 1905 बेंगल पार्टीशन. ओके, बाय द बेंगल पार्टीशन एंड 3 जियोग्राफिकल रीजन में डिवाइड हो गया. क्या क्या? महाराष्ट्र, बेंगल एंड पंजाब. महाराष्ट्र, बेंगल एंड पंजाब. महाराष्ट्र में था बाल गंगाधर तिलक. ओके, बेंगल में था बेंगल में बिपिन चंद्र पाल एंड अरविंद घोष. ओके, एंड पंजाब ग्रुप में लाला राजपत राय. सो लाल बाल पाल याद रखना, उससे याद रखो. लाला राजपत राय पंजाब, बाल गंगाधर तिलक बेंगल में, बी से बेंगल. ओके, पाल से आएगा महाराष्ट्र. डन. ये 3 जियोग्राफिकल रीजन क्रिएट किया. एंड गवर्नमेंट वाज टेकिंग अवे द एग्जिस्टिंग राइट. गवर्नमेंट वाज टेकिंग अवे, ले लिया था, जो भी राइट था वो भी ले लिया था. डन. आइडियोलॉजी देखो, आइडियोलॉजी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीगेशन भी एक
टेकन किया था, मूव बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, मूव बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड टू प्रोटेस्ट as they restored to strike, boycott, burning down for foreign items. ओके, स्वराज, इसका गोल क्या था? स्वराज और सेल्फ रूल। ओके, स्वराज और सेल्फ रूल। ओके डन, स्वराज एंड सेल्फ रूल। डिड पॉलिटिकल एक्शन में बेस्ड ऑन सेल्फ रिलायंस, सेल्फ sacrifice and strong will. They oppose the westernization of Indian society. The extremists never showed any loyalty to the British crown, and programs of boycotts and the Swadeshi national education scheme of education was set up for students who boycott the government schools and colleges. Passive resistance था and reassertions of national pride and constructive socio-economic reconstructions. तो देखो क्या क्या था आइडियोलॉजी में, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडरेट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल विद इन द लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन को यूज करके पिटिशन से, मीटिंग से, ओके, यूज करके ब्रिटिश के पास लेजिस्लेशन को एडिट करके सोशियो इकोनॉमिक राइट्स को पाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट क्या कर रहा था? एक्सट्रीमिस्ट एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रेशन द बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, द बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, प्रोटेक्ट एज दे रिस्टोर टू स्ट्राइक, ओके, रिस्टोर टू स्ट्राइक्स, बॉयकॉट, प्रोटेस्ट, सॉरी, मेथड टू प्रोटेस्ट कर रहा है एज दे रिस्टोर टू स्ट्राइक्स, बॉयकॉट्स, बर्निंग डाउन ऑफ फॉरेन आइटम। ओके, बर्निंग डाउन ऑफ फॉरेन आइटम्स, जितने सारे फॉरेन आइटम्स थे उस फॉरेन आइटम्स को बर्निंग किया, देन स्ट्राइक्स किया, ओके, स्ट्राइक्स भी किया, बॉयकॉट्स भी किया। ऐसे इस मेथड यूज करके, ओके, बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एग्रेशंस मेथड को यूज करके एक्सट्रीमिस्ट उसके प्रोटेस्ट कर रहा था, और इसका मेन गोल था सेल्फ गवर्नमेंट एंड सेल्फ रूल एंड स्वराज। ओके, डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन बेस्ड ऑन द सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सैक्रिफाइस एंड स्ट्रॉन्ग विल। उसका पॉलिटिकल एक्शन कुछ अलग था और इसका पॉलिटिकल एक्शन कुछ अलग है। एक्सट्रीमिस्ट का पॉलिटिकल एक्शन सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सैक्रिफाइस, खुदराम, इससे जो बहुत नेम था, सेल्फ सैक्रिफाइस, सेल्फ रिलायंस एंड स्ट्रॉन्ग विल था। ओके, पॉलिटिकल एक्शन इसलिए रहता एंड दे ओपोज द वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में जो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा था ना, इंडियन सोसाइटी में जो वेस्टर्नाइजेशन हुआ था, उस वेस्टर्नाइजेशन को अपोज कर रहा था। एंड एक्सट्रीमिस्ट नेवर शोड एनी लॉयल्टी टू द ब्रिटिश काउंट में कोई भी लॉयल्टी नहीं शो कर रहा था, जो मॉडरेट्स कर रहा था। ओके, programs, they organize lots of programs of boycotts and Swadeshi. Okay, and they boycott also the government schools and colleges, British government schools and colleges. They also boycott, and then they established the Indian national education and national scheme of education. Okay, national scheme of education. Passive resistance provide करता है, reassertions of national pride and constructive socio-economic reconstruction. They create the reconstructions. Okay, they create the national pride and constructive socio-economic reconstruction, national pride and constructive socio-economic reconstructions। मैंने न्यूली socio-economic reconstruction कर रहा था और national pride भी construction कर रहा था। ओके, reassertion of the national pride and construction of the socio-economic reconstruction। ओके, वर्क ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट का क्या क्या वर्क था? वर्क देखो, national movement become mass movement। Extremists brought, they wrote, they infused, added the biggest achievement. Okay, so national movement become mass movement. Okay, become mass movement, then spread in, कहाँ पर spread हुआ था? Okay, then spread in, okay, then आएगा, okay, देखो, they spread in the various part of the India like in Bombay, Pune by Tilak, Bombay और Pune by Tilak, in Punjab Lala Rajpat Rai and Ajit Singh, in Madras by Chindam Burma Palai, and in Delhi by Shahid Haidar Ras. Oh my God, बहुत सारा डिफाइन। Okay, national movement become the mass movement during the extremists.
and spread in the various part of India like Bombay and Pune by Tilak. बॉम्बे एंड पुणे में तिलक था एंड इन पंजाब में लाला लाजपत राय था, मैंने देख दिया लाला लाजपत राय इन पंजाब, ओके, एंड माद्रास बाय चिदम्बरम पिल्लाई एंड इन दिल्ली बाय शाहिद हैदर राज, ओके। तो यहाँ पर कौन कौन नेम है, नेम बॉम्बे एंड पुणे में तिलक, ओके। यहाँ पर भी देखो महाराष्ट्र में तिलक था, बाल गंगाधर तिलक, उसके बारे में बोला, ओके। बॉम्बे एंड पुणे महाराष्ट्र की बात है, बाल गंगाधर तिलक, एंड पंजाब में लाला लाजपत राय, माद्रास एरिया जो है वो माद्रास एरिया में पिलाई पिलाई चंदम चिंदाबरम पिलाई, एंड दिल्ली में शायद हैदर रायस, ओके डन। देन extremist brought struggle extremist brought the struggle from the council hall to street, हाँ काउंसिल हॉल से स्ट्रीट में ले आ गया, काउंसिल हॉल में था पहले, ओके, पहले मूवमेंट काउंसिल हॉल में था, अब स्ट्रीट में आ गया। दे एरोड द हेजेमोनी ऑफ द कॉलोनियल इंस्टीट्यूशन, ओके, दे एरोड द हेजेमोनी को एरोड कर रहा था ऑफ कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस। दे इन्फ्यूज्ड एनर्जी इनटू द नेशनल मूवमेंट, ओके, नेशनल मूवमेंट में एनर्जी इन्फ्यूज किया था, एंड द क्रिएट प्रेशर को क्रिएट कर रहा था ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस द रिफॉर्म्स, ओके, added socio-economic dimensions to national movement like the Swadeshi and boycott and the Swaraj. Biggest achievement, annulment of partitions of Bengal. Okay, annulment of partition of Bengal in 1911. 1911 में एक्सट्रीमिस्ट के इतना ज़्यादा मूवमेंट था, इस मूवमेंट के लिए एनुलमेंट किया था, पार्टीशन को एनुलमेंट किया था, ओके, यही PYQ था एक्चुअली, डन। तो फिर से वर्क ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट में क्या था, वर्क ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट में नेशनल मूवमेंट बिकम्स द मास मूवमेंट, इट्स स्प्रेड इन द वेरियस पार्ट ऑफ द इंडिया, पंजाब में लाला लाजपत राय, बॉम्बे पुणे में, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, एंड माद्रास में चिदम्बरम पिल्लाई, दिल्ली में थे शायद हैदर रेजा, एंड एक्सट्रीमिस्ट ने क्या था, काउंसिल हॉल में जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो स्ट्रीट में ले आया, एंड दे एरोड द हेजेमोनी ऑफ कॉलोनियल इंस्टीट्यूशन की हेजेमोनी जो है उस हेजेमोनी को तो टोटली एरोड कर दिया। दे इन्फ्यूज द एनर्जी को इन्फ्यूज किया इनटू द नेशनल मूवमेंट एंड क्रिएट ए प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस द रिफॉर्म, एग्जाम्पल द एक्ट ऑफ द 1909 एंड 1919, ओके, 1919 एडेड द सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन को एडेड किया टू द नेशनल मूवमेंट में सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन को भी एडेड किया, तो सोशियली ऐसे हो ब्रिटिश के वजह, इकोनॉमिकली इतने खराब हो ब्रिटिश की वजह से, लाइक द स्वदेशी बॉयकॉट एंड स्वराज, स्वदेशी होगा बॉयकॉट कर देगा, एंड स्वराज दैट्स मीन सेल्फ गवर्नमेंट, ओके, स्वराज दैट्स मीन सेल्फ रूल, बॉयकॉट ब्रिटिश वेस्टर्न प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना, एंड स्वदेशी हमारा होगा, ओके। बिगेस्ट अचीवमेंट एनुलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इन द 1911 में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर और भी एक बॉयकॉट के बारे में यहाँ पर था, बंगाल काउंसिल ऑफ इंडिया एजुकेशन वॉज सेट अप बाय द गुरुदास बनर्जी, क्या बोला मैंने, बंगाल काउंसिल ऑफ नेशनल एजुकेशन वॉज सेट अप बाय द गुरुदास बनर्जी, ओके, बंगाल काउंसिल ऑफ नेशनल एजुकेशन बांग्ला में था, बंगाल काउंसिल ऑफ नेशनल एजुकेशन सेट अप बाय द गुरुदास बनर्जी, बस कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट के बारे में, देन भाईसरे कार्जन एंड अदर वर्क ऑफ द कार्जन एंड स्वदेशी मूवमेंट, ओके। तो यहाँ पर नोटिस करके देखो, इस बेसिस मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट के बारे में हम कंपेयर करेंगे। सोशल बेसिस, आइडियोलॉजी, बिलीफ, डिमांड क्या था, मेथड क्या था, एंड अचीवमेंट क्या था, ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिया, लीडर कौन कौन से थे, ओके। स्पीड से देखो, सोशल बेस में जमींदार एंड अपर क्लास में, जमींदार अपर क्लास, और एक्सट्रीमिस्ट में एडुकेटेड मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास, ओके। आइडियोलॉजी वेस्टर्न लिबरल थॉट, एंड यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट में इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर एंड हेरिटेज। बिलीव करता था इंग्लैंड
providential missions in India. Okay, faith in the British sense of justice and British sense of justice में faith करा था and fair play and connection with the British beneficiaries and mass movement. Okay, यहाँ पर देखो exploitation natures of British administration and emphasized on the self governance Swaraj believe in the self reliance as the weapon against the domination. Recognition of the exploitative nature of the British unearthly loyalty and believe in the mass. Demand the constitutional reform and self government. Okay, यहाँ पर डिमांड था स्वराज मेथड यूज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड प्रेयर्स पेटिशन एंड परसुएशन एंड डिड नॉट हेजिटेट टू यहाँ पर नेक्स्ट मीन्स डिड नॉट हेजिटेट टू यूज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स like the boycott, passive resistance. Achievement, economic critique of British imperialism, like the theory of the oil drain and poverty and un-British rule in India. Constitutional reforms, repealing the Arm Act, increasing the spending on education, combined for the general administrative reforms and defense of the civil right. Okay, demand for the Swaraj contributing to mass movement. Okay, स्वराज contributing to mass movement में क्या था दादा पे नोरोजी support for revolutionary movement. ओके हाँ ये तो लाला राजपत राय बाल गंगाधर तिलक बिपिन चंद्र पाल एंड अरविंद घोष. डन कंपैरिजन हो गया. अब हम देखेंगे भाईसरे कार्जन के बारे में एंड अदर वर्क ऑफ कार्जन. भाईसरे कार्जन एंड अदर वर्क ऑफ कार्जन 1899 टू 1905 से भाईसरे कार्जन था. ये क्या क्या किया इस टाइम में देखो. पॉलिसी रिफॉर्म्स, एजुकेशन रिफॉर्म्स एंड आर्मी रिफॉर्म्स. क्या क्या पॉलिसी, एजुकेशन एंड आर्मी. ओके so sorry, police reforms, education reforms and army reforms. Police reforms, police commissions in 1902 under Sir Adroe Fraser, okay, recommend increase in police salaries and setting up training schools and provincial police service and central department of criminal intelligence. Okay, then education reforms, university commissions in 1902 in order to improve the discipline and failing educational standards, and based on the recommendations we passed the Indian University Act 1904 and increased the control over the Indian University and strict control over affiliations of private colleges. Army reforms carried out by Lord Kitchener's and commander-in-chief in army at that time, and Indian Army was grouped in two commanders, a northern commander and a southern commander. Okay, two commanders. Okay, देखो फिर से तो पुलिस रिफॉर्म होगा, एजुकेशन रिफॉर्म होगा एंड आर्मी रिफॉर्म. पुलिस रिफॉर्म, पुलिस कमीशंस इन 1902 अंडर सर एड्रू फ्रेजर increase in police salaries and setting up training schools, provincial police service and central department of criminal intelligence. Education reform में university commissions in 1902 in order to improve the discipline and failing education standards. Okay, improve discipline and failing education standards based on the recommendation he passed the Indian University Act. Indian University Act 1902 increase the control over the Indian University and strict control over the affiliations of private colleges. Okay, strict control over the affiliations of the private colleges. Armed reform carried out by the Lord Kitchener's and commander-in-chief in army at that time. Okay, Indian Army was grouped into two commanders. Indian Army are grouped in two commands, the northern commands and the southern commands. ओके आप इजीली देखो. पुलिस रिफॉर्म, पुलिस कमीशन 1902, एजुकेशन रिफॉर्म, यूनिवर्सिटी कमीशंस 1902 एंड इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904. आर्म रिफॉर्म में लॉर्ड किचनर्स. ओके तो यहाँ पर पुलिस रिफॉर्म में पुलिस कमीशंस 1902 अंडर द सर एड्रू फ्रेजर इंक्रीज पुलिस सैलरी. ओके, सेटिंग अप द ट्रेनिंग स्कूल्स, provincial
training provincial police service and Central Department of Criminal Intelligence. Education reforms. University commissions in 1902 in order to improve discipline and failing the education standards. And based on the recommendation he passed the Indian University Act 1904 and increased the control over the Indian University and strict control over the affiliations of private colleges. Armed reforms. So Lord Kitchener's commander of the chief of army. At that time, Indian Army was grouped in the two commands. Okay, Indian Army was grouped in two commands, and Northern Command and the Southern Command. Then, other work of Curzons. Curzons के other works. Okay, Curzons के other works. Other works में आया famine commission, irrigation commissions, cooperative credit society, Ancient Mountain Act 904, partition of Bengal. ओके एंड पूषा एग्रीगेशन इंस्टीट्यूशंस। तो क्या बोला एक बार फैमाइन कमीशंस क्रिएट किया था कार्जन फैमाइन कमीशंस क्रिएट किया था अंडर द सर एंथोनी मैकडोनल्ड। ओके, सर एंथोनी मैकडोनल्ड्स फैमाइन कमीशंस क्रिएट किया था। फैमाइन कमीशंस, इरिगेशन कमीशंस, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एंड एंशियंट मोन्यूमेंट एक्ट एंड पार्टीशन ऑफ बेंगल्स and Puta Agriculture Institutions. So, famine commissions under the Sir Anthony MacDonald and Irrigation Commission under the Sir Colin Scott, okay, Moncriefs, and Cooperative Credit Society Act 1904, loan to cultivators at the cheap rates. Okay, loan to cultivators at the cheap rates. तो Cooperative Credit Society, ऐसे एक सोसाइटी जो कोऑपरेटिव भी होगा और क्रेडिट भी प्रोवाइड करेगा, इसलिए बोलते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904, लोन टू कल्टिवेटर एट द चीप रेट। ओके, एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट 1904 टू प्रोटेक्ट एंड सेव द हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स इन इंडिया। ओके, मोन्यूमेंट एक्ट में हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना, सेव करने के लिए बात बोला। एंड पार्टीशन ऑफ बेंगल वाज द अनाउंस्ड, पार्टीशन ऑफ द बेंगल वाज अनाउंस्ड एंड पूषा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन द 1904 एस्टेब्लिश्ड। ओके, सो कितना 1 2 3 4 5 6 वर्क किया था। फैमाइन कमीशंस, इरिगेशन कमीशंस, ओके, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट, पार्टीशन ऑफ बेंगल एंड पूषा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस। डन, कंप्लीट। आप देखो स्वदेशी मूवमेंट 1905 से 1907 तक गए थे। पार्टीशन ऑफ द क्या था, पार्टीशन ऑफ बेंगल एंड एंटी पार्टीशन कंबाइंड। ओके, कंबाइंड एंटी पार्टीशन कंबाइंड। देन आएगा स्वदेशी मूवमेंट एंड कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1906। ओके, क्या बोला, पार्टीशन ऑफ बेंगल पार्टीशन एंड एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट एंड देन कलकत्ता सेशन कांग्रेस सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1906। ओके, पार्टीशन ऑफ बेंगल देखो यहाँ पर, पार्टीशन ऑफ द बेंगल, ब्रिटिश अथॉरिटी सेड दैट बेंगल हैड ग्रोन, क्या बोला था ब्रिटिश अथॉरिटी में। ओके, and to be efficient administration by single provision. Okay, the scheme for partition began. Okay, then partition, British government decision to partition Bengal made public in December 1903. Okay, and the idea was two provinces, क्या idea था, two provinces। then आएगा basis of the religion। okay, basis of the religion। then आएगा issued the order। okay, so देखो, the British authority said that Bengal had grown too big। okay, grown too big to be efficiently administered by a single provincial government। okay, efficiently administered by a single provincial government। क्योंकि क्या बोला था कि बेंगल प्रोविंसेस इज टू बिग। ओके, इज टू बिग एंड टू बी एफिशिएंटली एडमिनिस्ट्रेट के लिए बाय सिंगल प्रोविंशियल गवर्नमेंट में इज एफिशिएंटली एडमिनिस्ट्रेट के लिए बेंगल पार्टीशन इज द नेसेसिटी। द स्कीम फॉर द पार्टीशन बिगेन विद द कार्जन मिनिट्स ऑन द टेरिटोरियल redistributions on the first zone 1903 में कि फर्स्ट जोन में टेरिस्ट्रियल रीडिस्ट्रीब्यूशन, टेरिस्ट्रियल को दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसलिए बोला था स्कीम और पार्टीशन बिगेन हुआ था कार्जन मिनट में। कार्जन मिनट क्या है, टेरिस्ट्रियल रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था ऑन 1 जून 1903।
British government decision to partition of Bengal, partition Bengal had been made public in December 1903. 1903 की दिसंबर में पार्टीशन ऑफ बंगाल हैड बीन मेड पब्लिक। ओके, डिसीजन कब इम्पोज किया था वो नहीं, लेकिन डिसीजन कब दिया था। ओके, तो 1903 की दिसंबर दिसंबर मंथ में पार्टीशन ऑफ बंगाल की डिसीजन दिया था। ओके, द आइडिया वाज टू टू प्रोविंसेस बंगाल comprising western Bengal as well as the provinces of Bihar, Odisha and Eastern Bengal and Assam. Okay, Western Bengal था, Western Bengal and Bihar, Odisha and Eastern Bengal and Assam. Okay, Bihar, Odisha, Eastern Bengal and Assam. Done. As well, नहीं, हाँ सही। ओके ओके, और नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया मेरा। वेस्टर्न बंगाल के साथ साथ बिहार एंड उड़ीसा था, वेस्टर्न बंगाल के साथ साथ बिहार एंड उड़ीसा था, एंड देन ईस्टर्न बंगाल के साथ आसाम था। ओके, ईस्टर्न बंगाल के साथ आसाम था। इसमें वेस्टर्न बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा एंड ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम। ओके, on the basis of the किसके basis of the religion, as the western half was to be a Hindu majority. Okay, western half क्या था, हिंदू मेजोरिटी एरिया था वेस्टर्न एरिया में, एंड द ईस्टर्न हाफ was to be मुस्लिम मेजोरिटी एरिया। ओके, ईस्ट पार्ट में मुस्लिम मेजोरिटी एंड वेस्ट पार्ट में हिंदू मेजोरिटी था। इसलिए ऑन द 20th July 1905, 20th July 1905 Karjan issued the order to divide the Bengal into two parts. Okay, on 20th July 1905, Karjan issued the order divide Bengal into two parts: Eastern Bengal and Assam and West Bengal, Bihar and Odisha. Okay, फिर से देखो, फिर से क्या, partition of the Bengal. British authority said Bengal is a very big, and for efficiently administered by a single provincial government. Okay, single portion scheme of the partition began with the Cardinal Minutes. Territorial redistribution start 1st June 1903, and the decision made in public in the December 1903. Okay, December 1903, and the idea was two provinces like West Bengal, Bihar, Odisha, and the East Bengal and Assam. Okay, the basis of the religions, western half में था हिंदू मेजोरिटी एंड ईस्टर्न हाफ में था मुस्लिम मेजोरिटी। on the 20th July, okay, 20 July 1905, Karjan issued the order to divide the Bengal into two parts: Eastern Bengal and Assam and Western Bengal, Bihar and Odisha. Okay, done. Anti-partition campaign में क्या था, ड्यूरिंग दिस पीरियड में क्या हुआ था, method to adopt and on August 7, okay, with the passage the boycott resolutions के बारे में बोला, and boycott first suggestions boycott was first suggested in Krishna Kumar Mitra journals Sanjeevan, and imaginative use of traditional popular festival and melas. Anti-partition campaign during this period, इस period में क्या क्या हुआ था, during this period the leadership was provided by men like the Surendranath Banerjee, okay, Surendra Banerjee, K.K. Mitra and the Pitho Wish Chandra Rai. Okay, method adopt were petition to the government. Method adopt petition to the government, public meeting, memoranda and propaganda through the pamphlets, newspaper, exact pressure on the government. Okay, pressure on the government through an educated public opinion in India and England to prevent the unjust partition from being implemented. Method was adopted. Okay, method adopted हुआ, petition to the government को petition होगा, and public meeting होगा, memoranda भी जाएगा, propaganda through the pamphlets, newspaper to the exact pressure on the government through an educated public opinion in the India and England to prevent the unjust partition from during the implementation. तो क्या क्या होगा, public meeting होगा, memoranda, propaganda, pamphlet, newspaper, educated public opinion. Okay, then on August 7, 1905, with the passage of the boycott resolution in a massive meeting. Okay, boycott resolution in a massive meeting held in the Calcutta town hall, and the formal proclamation of the Swadeshi movement was made on August 7, 1905, with the
passage of the boycott resolutions. Okay, with the passage of the boycott resolution is in a massive meeting held in the Calcutta town hall, and formal proclamation on the Swadeshi movement was made. Done. तो क्या बोला, फिर से देखो यहाँ पर, on August 7 19 okay 1905, with the passage of the boycott resolution, a massive meeting held in Calcutta town hall. Okay, Calcutta town hall में massive meeting हुआ है. The formal proclamations of the स्वदेशी movement was made. यहाँ पर कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी मूवमेंट की बात यहाँ पर हुआ. एंड बॉयकॉट वाज फर्स्ट सजेस्ट, कौन पहले बॉयकॉट को सजेस्ट किया था? कृष्ण कुमार मित्र, जर्नल. ओके, जर्नल ऑफ द संजीवनी. ओके, कृष्ण कुमार मित्र जर्नल इज संजीवनी. Boycott first suggested. Okay, then imaginative use of traditional popular festivals and meals. Okay, imaginative use traditional popular festivals and melas. For instance, तिलक गणपति. ओके, बाल गंगाधर तिलक तो महाराष्ट्र में था, वो गणपति स्टार्ट किया था. एंड द शिवाजी फेस्टिवल्स, और गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल्स become a medium of the Swadeshi propaganda, not only in Western India but also in Bengal. Okay, not only in Western India, but also in Bengal. In Bengal, also the traditional folk fates. Okay, traditional folk theatres from were used for this purpose. Traditional folk भी यूज किया था, traditional folk theater forms were used for this purpose. इस पर्पस के लिए यूज भी किया था. ओके, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम देखेंगे अक्टूबर. ओके, यहाँ पर देखो अक्टूबर 16 1905, द डे पार्टीशन फॉर्मली कम इनटू फोर्स. ओके, अक्टूबर 16 1905, the day the partition formally come into the force. Okay, was observed as a day of mourning throughout the Bengal. Okay, यहाँ पर क्या क्या हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर composed the song আমার সোনার বাংলা for the occasions, and Tagore also give the call for the Raksha Bandhan as a symbol of unbreakable unity of Bengalis. And Ramendra Sundar Trivedi are the observations of Arandhana, and keeping the hearth unlit as a sign of mourning of all in homes. Okay, and Abanindranath Tagore, he broke the Victoria traditions of painting and broke the Victoria tradition of painting and took inspiration from Ajanta, Mughal and Rajput painting. Okay, he first created the Indian Society of Oriental Art and later went on to establish Bengal School of Art. The extremists found expressions in the periodical like New India, Bande Matram, Sandhya at Yugantar. Okay, edited New India edited by Bipin Chandra Pal, and Bande Matram edited by the Aurobindo Ghosh, and Sandhya edited by the Brahma Bandhav Upadhyay. Yugantar edited by the Upendranath Datta. Okay, the Indian National Congress session at the Banaras in 1905 under the presidentship of Gokhale. Okay, presidentship of Gokhale, and adopt the Swadeshi movement as the official movement of Congress. फिर से देखना पड़ेगा, फिर से देखो. October 16 1905, the day of the partition formally come into the force. Okay, come into the force. Rabindranath Tagore
composed the song Amar Sonar Bangla. And Tagore also gave the call for Raksha Bandhan as symbol of the unbreakable unity of Bengal. And Ramendra Sundar Trivedi argued the observance of Arandhana keep the hearth unlit as a sign of mourning in all homes. Okay. Abanindranath Tagore, he broke the Victoria tradition of painting and took inspiration from the Ajanta Mughal and Rajput painting. He first created the Indian Society of Oriental Art and later went on to establish the Bengal School of Art. Okay, the extremists found the expression in periodical like The New India, edited by Bipin Chandra Pal, and Bande Matram, edited by the Aurobindo Ghosh, and Sandhya, edited by the Brahma Brahmandha Upapadhyay, and Yogantar, edited by the Upendranath Tattva. The Indian National Congress session at the Banaras in 1905 under the presidency of Gokhale. Okay, adopted the Swadeshi movement. ताहले कौन स्वदेशी मूवमेंट अडॉप्ट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस की? गोखले. ओके, इन द ऑफिशियल मूवमेंट ऑफ कांग्रेस. अब हम देखेंगे स्वदेशी मूवमेंट. इट्स टू एड्स ओपन. इट प्रमोटेड इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज. ओके, क्या प्रमोट किया था? टू एड्स ओपन किया था बॉयकॉट एंड स्वदेशी. बॉयकॉट करना और स्वदेशी को लेना. एंड promoted the indigenous industries. क्या give the simultaneous the country's economic progression. न्यू पॉलिटिकल ओपन किया था. ओके, बिगिनिंग ऑफ द मल्टी क्लास. क्या बिगिनिंग हुआ था यहाँ पर? एंड मूवमेंट गिव द ट्रस्ट टू द ओके सेल्फ रिलायंस. देखो फिर से टू एड्स ओपन किया था, बॉयकॉट था एंड स्वदेशी था. एंड टू promoted indigenous industries and give the stimulus to the country's economic progress. New political open. Swadeshi boycott mass agitation, passive resistance. Okay, beginning the multi-class movement. Higher class, lower class, middle class, everyone is attend this movement. ओके, स्टूडेंट्स, वुमेन, स्टूडेंट भी था, वुमेन भी था, लोअर मिडिल क्लास भी था, पेशेंट था इन सम एरियाज. मूवमेंट गिव द थर्स्ट टू आत्मशक्ति. ओके, गिव द थर्स्ट टू द आत्मशक्ति बा सेल्फ रिलायंस. ओके, तो टू एड्स ओपन बॉयकॉट एंड स्वदेशी प्रमोट इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज एंड गिव द इकोनॉमिक प्रोग्रेस. Okay, stimulation the economic process. New political open में स्वदेशी boycott mass movement, passive resistance, beginning the multi-class movement, student, women, middle class, patient, and give the thrust to the Atma Shakti, and that is the self-reliance. कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में क्या था 1906 में? यहाँ पर था कि दादाभाई नौरोजी was elected as the president. Okay, कलकत्ता सेशन in Congress in 1906. दादाभाई नौरोजी was elected. Okay, elected as the president. प्रेसिडेंट दादाभाई नौरोजी था. देन क्या हुआ? यहाँ पर गोल क्या था? द गोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. ओके, पास द 4-point रेजोल्यूशन स्वदेशी बॉयकॉट एंड स्वराज एंड द नेशनल एजुकेशन. तो फिर से देखो, दादाभाई नौरोजी was elected as the president and as concession to the militant and the goal of the Indian and as a concession. Okay, and a concession of the militant to the militant, and the goal of the Indian National Congress was defined as Swaraj or self-government. Okay, like the United Kingdom or colonies. Pass the 4-point resolutions. 4-point resolution पास किया था. स्वदेशी था, स्वदेशी boycott Swaraj and the national education. स्वदेशी boycott Swaraj and the national education. डन. तो क्या बोला मैंने? 1906 में कौन प्रेसिडेंट था? दादाभाई नौरोजी प्रेसिडेंट था. दादाभाई नौरोजी 3 times प्रेसिडेंट हुआ था. ओके, एंड एज ए कंसेशन टू द मिलिटेंट एंड द गोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिफाइंड the Swaraj and self government like the United Kingdom or the colonies, and or the colonies, and pass the 4-point resolutions Swadeshi boycott Swaraj and the national education.
स्वदेशी बॉयकॉट, स्वराज एंड द नेशनल एजुकेशन। डन हो गया। अब देखो इम्पैक्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। ओके यहाँ पर हो गया। इम्पैक्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, द सूरज स्प्लिट, पोस्ट स्वदेशी मूवमेंट एंड एनुलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ द बंगाल। फिर से देखो, सोशल इम्पैक्ट तो हुआ था, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हुआ था। जो सोशल और इकोनॉमिक करेक्शन करने के लिए मॉडरेट्स ने इतना कोशिश किया, वही सोशल इम्पैक्ट एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी यहाँ पर देखने को मिला, एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी देखने को मिला। पॉलिटिकल इम्पैक्ट के लिए भी काम किया था, जो एक्चुअली एडिशन ऑफ लेजिस्लेचर। ओके, दैट्स मीन करेक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर लॉस एंड पोस्ट स्वदेशी मूवमेंट की बाद में क्या होता, एंड स्टूडेंट स्पीड भी हो गया, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स की स्पीड भी हुआ, एंड एनुमिलेंट हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल। सो कितने पॉइंट, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, स्टूडेंट स्पीड, पोस्ट स्वदेशी मूवमेंट एंड एनुमुलेशन ऑफ द पार्टीशंस। ओके 3 6 दो। सो देखो सोशल इम्पैक्ट, देखो यहाँ पर सोशल इम्पैक्ट देखो। सोशल इम्पैक्ट की बात जब आएगा तो डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, क्या डेवलपमेंट हुआ है इस टाइम में। ओके, यहाँ पर डेवलपमेंट क्या हुआ है, यहाँ पर भी डेवलपमेंट की बात बोला। देन हम देखेंगे फॉर्मली इनॉग्रेटेड क्या हुआ है। ओके, एंड देन हम देखेंगे ओके स्कूल भी इस्टेब्लिश्ड हुआ है। ओके, और ओके सॉन्ग, अब देखो, सो डेवलप्ड ऑफ लिटरेचर, पैट्रियोटिक सॉन्ग। ओके, यहाँ पर डेवलप हुआ है लिटरेचर एंड पैट्रियोटिक सॉन्ग। रविन्द्रनाथ टैगोर रोट আমার সোনার বাংলা and শঙ্করাম গণেশ দোয়াশকার রোড দেশের কথা, which become the extremely popular. Okay, শাখারাম গণেশ দোয়াশকার রোড দ্য দেশের কথা, which become extremely popular. Develop the national education জাতীয় শিক্ষা পরিষদ। ओके, किया डेवलप किया नेशनल एजुकेशन जातीय शिक्षा परिषद। नेशनल एजुकेशन जातीय शिक्षा परिषद डेवलप किया नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। ओके, बाय द सतीश चंद्र मुखर्जी, which was formally inaugurated in August 1906, Bengal Technical Institution at the Jadavpur। बेंगल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जादवपुर, जो जादवपुर यूनिवर्सिटी नेम से परिचित है। 1906 में बेंगल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जादवपुर क्रिएट हुआ, एंड द फंड वाज राइज टू सेंड द स्टूडेंट टू जापान। फंड राइज हो रहा था कि स्टूडेंट को सेंड करना है जापान में फॉर द एडवांस लर्निंग, एंड नेशनल कॉलेज एट कलकत्ता विद द अरबिंदो एज ए प्रिंसिपल। ओके, नेशनल कॉलेज एट कलकत्ता, जादवपुर यूनिवर्सिटी, दैट्स मीन बेंगल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन ऑफ जापान, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन बाय सतीश चंद्र मुखर्जी। ओके, सतीश चंद्र मुखर्जी जो जापान बेंगल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एट द जापान क्रिएट किया था, बेंगल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एट द जादवपुर। ओके, एंड नेशनल कॉलेज एट द कलकत्ता, अरबिंदो वाज एज ए प्रिंसिपल्स, एंड नंबर ऑफ नेशनल स्कूल वाज एस्टैब्लिश्ड। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, क्या डेवलप हुआ था, क्या एस्टैब्लिश्ड एंड कैरिड। ओके, economically developed several industries, Bengal Chemicals and Tata Steels. Okay, developed several industries like Bengal Chemical and Tata Steels, and established banks, insurance companies. Okay, carried the economic critique of colonialism from the class to masses. Class that's my higher class to mass, in the masses में इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म हुआ था, एंड एस्टेब्लिश ऑफ बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी। ओके, एस्टेब्लिश किया था बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी को, एंड डेवलप्ड ऑफ सेवरल इंडस्ट्री बेंगल केमिकल एंड टाटा स्टील्स। ओके, पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखो, पॉलिटिकल इम्पैक्ट में जो बात है, राइज द एक्सट्रीमिस्ट एंड न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रगल्स एंड द डायरेक्ट एक्शन एंड इरोड द कॉलोनियल हेजेमनी। ओके, तो राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, क्या राइज हुआ था पॉलिटिकल इम्पैक्ट में, क्या राइज हुआ था, एक्सट्रीमिस्ट राइज हुआ था। ओके, मॉडरेट से एक्सट्रीमिस्ट राइज हुआ, एंड न्यू फॉर्म ऑफ द स्ट्रगल्स,
दैट्स मीन जो मूवमेंट और स्ट्रगल न्यू फॉर्म क्या क्रिएट हुआ था, मास एग्रीगेशंस। ओके, मास एग्रीगेशंस, मार्सेस एंड द प्रभात पैरिश एंड द शमितिस। ओके, शमितिस, mass agitation, marches and the prabhat parish and the shamitis। ओके, डिरेक्ट एक्शन, डिरेक्ट एक्शन भी होगा एंड एरोड करेगा कॉलोनियल हेजेमनी। ओके, डिरेक्ट एक्शन होगा एंड एरोड करेगा कॉलोनियल हेजेमनी। न्यू फॉर्म ऑफ द स्ट्रगल, मास एगिटेशन एंड मार्सेस एंड प्रभात पैरिश एंड शमितिस। ओके, एंड डिरेक्ट एक्शन होता है यहाँ पर एंड एरोड करेगा कॉलोनियल हेजेमनी जो था उस हेजेमनी को एरोड किया। अब देखो स्टूडेंट स्पीच भी हुआ था यहाँ पर। स्टूडेंट स्पीच में क्या क्या हुआ था, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस क्रिएट हुआ इन दिसंबर 1905 की बात। ओके, बर्डा सेशन की बात यहाँ पर बोला एंड देन द कलकत्ता सेशन में क्या हुआ, एंड द एक्सट्रीमिस्ट वांटेड द 1907 सेशन। ओके, एक्सट्रीमिस्ट वांटेड द 1907 सेशन में क्या हुआ था, मॉडरेट वांट्स, ओके, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डन। देखो यहाँ पर स्टूडेंट स्पीच 1907 में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस क्रिएट हुआ था मॉडरेट एंड द एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, इंटेंसिफाइड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द बंगाल। ओके, इंटेंसिफाइड हुआ था आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द बंगाल में, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस इंटेंसिफाइड हुआ था। इन दिसंबर 1905 द बनारस सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की बनारस सेशन प्राइज्ड ओवर बाय गोखले। ओके, प्राइज्ड ओवर बाय गोखले and the moderate extremist difference come to the fore। Okay, in December 1905 at the Banaras session में Indian National Congress presided by the Gokhale, the moderate extremist the moderate extremist difference come into the fore। Okay, difference यहाँ पर भी काम in front आया था। ओके, सो बनारस सेशन में नेशनल कांग्रेस प्रिसाइड होता है लेकिन वो बाय द गोखले, प्रिसाइड बाय गोखले, लेकिन मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो है उस दोनों के बीच में के जो डिफरेंस है वो डिफरेंस यहाँ पर इम्पोर्ट आया है। कलकत्ता सेशन 1906 में दिसंबर 1906 दादाभाई नौरोजी वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, दादाभाई नौरोजी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड 4 पॉइंट रिजोल्यूशन एडॉप्टेड स्वदेशी, 4 पॉइंट रिजोल्यूशन दिया था स्वदेशी, बॉयकॉट, बॉयकॉट स्वराज एंड द नेशनल एजुकेशन, स्वदेशी बॉयकॉट स्वराज एंड नेशनल एजुकेशन, ये 4 पॉइंट रेजोल्यूशन दिया था। एंड एक्सट्रीमिस्ट wanted the 1907 session to be held in Nagpur, or held in the Nagpur central provinces। Okay, held in the Nagpur, extremists wanted with Tilak or Rajpat Rai as the president। Okay, Tilak और राजपूत राय, बाल गंगाधर तिलक, ओके, लाल बाल पाल, ये तीनों एक्सट्रीमिस्ट था जो तिलक और राजपूत राय एज द प्रेसिडेंट एक्सट्रीमिस्ट वांट एंड द reiteration of the Swadeshi, okay, and boycott and the national education resolutions। Okay, the moderates want the session at the Surat in order to exclude Tilak from the presidency। order to exclude कर देगा तिलक को, तिलक नहीं होगा प्रेसिडेंट। moderates wanted that Tilak's not be a president, okay, instead they want Rajbihari Ghosh as the president। okay, and moderates want the Rajbihari Ghosh wanted the president, लेकिन extremists want the Tilak to be a president। should to drop the resolution of the स्वदेशी, और ड्रॉप कर देगा रिजोल्यूशन ऑफ द स्वदेशी। ओके, ड्रॉप कर देगा रिजोल्यूशन ऑफ द स्वदेशी बॉयकॉट नेशनल एजुकेशन स्वदेशी एंड बॉयकॉट ये 4 जो रिजोल्यूशन दिया था स्वदेशी बॉयकॉट नेशनल एजुकेशन, इस तीनों को ड्रॉप कर देगा राजबिहारी घोष। लेकिन मॉडरेट्स वांटेड द सेशन इन द एट द सूरत इन ऑर्डर टू एक्सक्लूड द तिलक फ्रॉम द प्रेसिडेंसी। ओके, और यहाँ पर क्या चाहते, रिटेरेशन ऑफ स्वदेशी, ऑफ द स्वदेशी बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन। ओके, डन। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट हु इज रिजल्ट इन स्पीड। ओह, इतनी सी बात। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस तो पहले से था लेकिन इस आइडियोलॉजिकल डिफरेंस इंटेंसिफाइड हुआ था आफ्टर द बंगाल पार्टीशंस। ओके, इन दिसंबर 1905 में एट द बनारस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रिसाइड बाय द गोखले, लेकिन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट का डिफरेंस जो था वो डिफरेंस कम इनटू द फोर्स फॉर प्ले फॉर इनफ्रंट आया था। कलकत्ता सेशन 1906 इन दिसंबर, दादाभाई नौरोजी द प्रेसिडेंट, दादाभाई नौरोजी डिक्लेयर्स द 4 resolutions
फोर रेजोल्यूशंस एंड 4 पॉइंट रेजोल्यूशंस क्या था एडॉप्ट किया स्वदेशी बॉयकॉट बॉयकॉट स्वराज एंड द नेशनल इलेक्शंस टेकिंग एस्टिमेट्स फ्रॉम द 1907 1907 held in the Nagpur जो सेंट्रल प्रोविंसेस था तिलक और लाला राजपूत राय बी ए प्रेसिडेंट एंड द रिटेरेशन ऑफ द स्वदेशी एंड बॉयकॉट एंड द नेशनल रेजोल्यूशंस ओके ऐसा होना चाहिए लेकिन द मॉडरेट वांटेड इन द सेशंस एट द स्टूडेंट बट द मॉडरेट वांटेड द सेशन एट द स्टूडेंट में सेशन होना चाहिए इससे मॉडरेट चाह रहा था लेकिन मॉडरेट में तिलक प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए ओके दैट्स मीन एक्सट्रीमिस्ट नागपुर में चल रहा था एक्सट्रीमिस्ट नागपुर में चल सेंट्रल प्रोविंसेस लेकिन मॉडरेट मॉडरेट चल रहा था कहाँ पर सूरत में लेकिन एक्सट्रीमिस्ट चल रहा था कि एक्सट्रीमिस्ट वांटेड प्रेसिडेंट शुड बी तिलक और लाला राजपत राय लेकिन मॉडरेट्स वांटेड प्रेसिडेंट शुड बी राजबिहारी घोष okay Raspberry Report and adopt the resolution Swadeshi boycott and the national education and conflict between the moderate and the extremists modern extremists which resulted in the split post Swadeshi movement देखो the post Swadeshi movement between the 1907 and 1911 okay this legislation included this is legislation included ओके इंक्लूडेड क्या था इंक्लूडेड यहाँ पर क्या था देन आएगा तिलक द मेन एक्सट्रीमिस्ट लीडर ओके मेन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स कौन था एंड देन अरविंद घोष एक्टिव पॉलिटिक्स ओके रिटर्न राजपूत लेफ्ट फॉर एबॉर्ट ओके समझ में आया बिटवीन 1907 and 1911 several new laws were enforced to check anti-governmental activity okay several new laws were enforced to check the anti-government activity okay गवर्नमेंट एक्टिविटी की अगेंस्ट में जो एक्टिविटी था उस एक्टिविटी को डिक्रीज करने के लिए सेवरल न्यू लॉस एनफोर्स किया था गवर्नमेंट में ओके दिस लेजिस्लेशन इंक्लूडेड द इस टाइम में जो लॉ एडिट हुआ था वो क्या था सेडिटियस मीटिंग एक्ट 1907 ओके सेडिटियस मीटिंग एक्ट कोई भी अगर इंडियन कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी कुछ भी मूवमेंट किया उसके बोले सेडिटियस देशद्रोही ओके सेडिटियस मीटिंग एक्ट मीटिंग नहीं हो पाएगा इंडियन न्यूज़पेपर ओके इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट जैसे इंसेंटिमाइट ऑफ ऑफेंस टू ऑफेंस इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट 1908 ओके जैसे प्री सेंसरशिप होना चाहिए एंड क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 and the Indian Press Act 1919 okay 10 the Tilak was the main extremist leader Tilak main extremist leader था जो was sent to मंडलाया बर्मा ओके बर्मा में जेल फॉर 6 years के लिए तिलक को जेल दे दिया था अरविंद घोष एंड बीसी पाल रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स अरविंद घोष एंड बीसी पाल रिटायर्ड फ्रॉम द एक्टिव पॉलिटिक्स ओके तिल राजपूत राय लेफ्ट फॉर एब्रोड तीनों ही निकल गए थे ओके लाल बाल पाल तीनों ही निकल गए थे लाला राजपूत राय लेफ्ट फॉर एब्रोड लाल बाल दैट्स मीन यहाँ पर बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक जो 6 years के लिए जेल बर्मा में भेज दिया था एंड बीसी पाल लाल बाल पाल बीसी पाल रिटायर्ड फॉर एक्टिव पॉलिटिक्स रविंद्र बीसी पाल ओके annulment of partition of Bengal 1911 the partition was established the partition was declared unconstitutional okay यहाँ पर क्या अनाउंस हुआ था then annullated and the capital was moved creation of the Bengal provinces creation of Bihar and Odisha provinces okay the partition was declared the unconstitutional in 1911 okay as a result of widespread of the political protest okay political protest बहुत ज़्यादा हुआ था इसलिए partition Bengal की partition was declared as unconstitutional Bengal की partition was declared as unconstitutional in 1911 में okay on the December 12 to 1911 में King George V announced
okay, announced at the Delhi Durbar at the Eastern Bengal. At the Delhi Durbar, the Eastern Bengal would be the absorbed into the Bengal presidency. At the Delhi Durbar, that at the Delhi Durbar में अनाउंस किया था, दैट्स मीन किंग जॉर्ज 5 अनाउंस किया था दिल्ली दरबार में that Eastern Bengal would be absorbed into Bengal presidency. Okay, would be absorbed into the Bengal presidency. Lord Hardings annulled. Okay, Hardings. Okay, Lord Harding annulled the partition of the Bengal in 1911. The capital was moved to New Delhi. Okay, creation of Bengal provinces and creation of the Bihar and Odisha provinces. United West and East Bengal and creation of the Bihar and Odisha provinces. Okay, तो क्या बोला मैंने पार्टीशन was declared unconstitutional in 1911 में because of widespread of the political protest and the King George V announced किया था दिल्ली दरबार में that Eastern Bengal would be absorbed into the Bengal presidency. In the Bengal presidency, okay, the capital was moved to New Delhi. Capital moved होना चाहिए न्यू दिल्ली में. Done. Creation of the Bengal provinces की जो creation होगा by United States. Okay, then creation होगा क्या Bengal provinces and Bengal West and East को united किया Bengal provinces and creation of the Bihar and Odisha provinces. So complete हो गया हमारा आज की total discussions.